Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Benchmark domestic stock surged more than 1.5%, recovers losses of the last two sessions. Sensex closes at 49,398, Nifty settles at 14,521. And Asian stocks log gain amid expectation of more US government spending to boost the economy. घरेलू शेयर बाजार में पिछले दो सत्रों से जारी गिरावट के रुख को पलटते हुए प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 49,398 पर बंद हुआ, निफ्टी 14,521 दर्ज हुआ और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकारी खर्च में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं पर एशियाई शेयर बाजारों में आज दिखी जोरदार लिवाली। श्रोताओं, हमारे साथ आज खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं जाने माने बाजार विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम शरद। थैंक यू, धन्यवाद जी। बहुत आइए शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में पिछले दो सत्रों से जारी गिरावट का रुख आज पलट गया। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 834 अंक यानी 1.72% की बढ़त लेकर 49,398 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 240 अंक यानी 1.68% बढ़कर 14,521 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर रहा है। मिड कैप इंडेक्स खास तौर से बीएसई मिड कैप इंडेक्स आज 2.31% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.66% की वृद्धि हुई। Benchmark domestic stocks today surged more than 1.5%, recovering the losses of the last two sessions. The Sensex and Nifty logged gains amid positive global cues. The BSE Sensex closed 834 points or 1.72% up at 49,398. The NSE Nifty also climbed 240 points or 1.68% to trade at 14,521. The broader market at BSE also gained. The BSE Mid Cap Index jumped 2.31% and the BSE Small Cap Index rose 1.66%. In the Sensex pack, shares of 27 companies climbed while 3 logged modest gains. Bajaj Finserv was the top gainer as it surged 6.8%, followed by Bajaj Finance, which climbed 5.3%. HDFC rose 3.3%, while Larsen & Toubro both appreciated 2.6%. On the other side, Tech Mahindra fell 0.5% and ITC slipped 0.3%. In fact, 27 companies climbed while 3 logged modest losses. In sectoral indices, all 19 sectors rose. Realty sector was top gainer. It gained 4%. Metal climbed 3% and power surged 2.8%. Capital goods and industries both ended 2.7% up. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,124 companies climbed while 874 declined. Shares of 148 companies remained unchanged.
241 companies rose to their 52-week high, while 40 companies fell to their 52-week low. रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 11 पैसे मजबूत हुआ, 73 रुपए 17 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.31% कमजोर होकर 90.48 पर आ गया। Sharad, the broader market at BSE gained today. The BSE mid-cap index jumped 2.31% and the BSE small-cap index rose 1.66%. What should and where should one be looking closely in this space of mid-cap and small-cap? See, actually the focus of investors, particularly, the avid listeners of Market Mantra, I think our piece of advice would be that they should be very, very careful because, you always have a chance of burning your fingers at some point and you get trapped in the market. So I think the word of advice is that you should be looking at stocks which are low on valuation, which have got strength in their balance sheet. The book value is low, the PE multiple is low. So I think those are the companies which should be looked around. That's why, if you've seen the movement of the market today, you would see that there was more movement in mid caps, and I think the answer is very clear because in the large caps you have all the big stocks, the blue chips, and they have already done their bit in the last few months. We've seen that the prices of some of the large caps, although I don't say that large caps will not rise any further, but then relatively speaking, you will find that the large caps have already risen to a certain level, whereas mid caps there are still picks to be done. You can pick up the stocks at low on valuation, the companies which have not moved yet. In fact, when the market fell in the month of March, at the time of lockdown, so some of the prices really, really went down. They went down below 50% of their earlier traded value. And although the market, if we look at the Nifty, we have seen that it has almost doubled over the last, from March until now, almost doubled, if not totally doubled. So, Sharad, what you said was that one needs to look closely at certain sectors. And one such sector that I am pointing out to you is the textile sector. There are a lot of companies in the textile sector, maybe even lower than 2,500 crore market cap, because that is one sector which the government would focus on going forward. Plus, it is going out of the long cycle of mess and a lot of problems. Do you see opportunities over there? Yes, I do. In the medium to short term, textile sector is the sector to look at because why the sector has been a bit of a laggard till now is because textile ultimately converts to garments, to apparel. Whereas we saw that during lockdown, even after lockdown, because of diminishing incomes, people were not in a hurry to go and buy new apparels, new garments. We saw the weddings went down, the parties where people wear these apparels, they went down. So obviously there was a bit of a slowdown, relatively speaking, more than the other sectors. But now, with things opening up, the vaccine has been rolled out, life is getting back to normal. India, fortunately, even without the vaccine, we are recording an all-time low cases. So I think India is the place where you will see textiles picking up once again. We will see garment exports. And also the other reason is that the garment exports from India, which is a major part of textiles revenue, it goes to Europe, it goes to America. And because of these European and American markets not having been able to resume their economic activity entirely, I think that has been another reason. But in the times to come, yes, you're right, textile is one such sector which is not caught up with rest of the sector. So I think if you're looking for a very good pick in textile sector, I'm sure it will give you very good returns in the medium to short term. But I would suggest medium to short term. I would not suggest a very, very short term view because we find so many times our listeners, they tend to get carried away by the price. Whereas you find then they get trapped for several weeks or several months and then they say, oh, the stock hasn't moved. So I think you need to wait for some time. Patience is a virtue in stock market. That's my way of advising people, that do not be in a hurry, have patience, look at the stock, wait for some time and then make the investment. So what about the other sectors where you need to explore, something like steel companies or the metal sector, cement, ancillaries? These are the ones that one should be looking at? Absolutely, because the union budget is on the corner. It's going to be announced on 1st of February. And to my understanding, government is going to give a major thrust to infrastructure.
So when we talk of infrastructure, we take within the fold, we take real estate, and within real estate, you take cement, you take steel, metal. Then metal has also been rising because of the unprecedented demand for automobiles. I think we've been witnessing the automobile sale numbers beating the pre-COVID numbers. So where people are probably going for private mobility, people are not going for public transport. So there was an unprecedented demand of the two-wheelers and four-wheelers. And obviously these are goods which are made of metal. So we've been witnessing a very, very aggressive move on the metals, and not just in India. We've been noticing the metal phenomena even in America, in Europe, across the board. So I think metal, cement, infrastructure, these are the other sectors. A word of caution about pharmaceuticals, because pharmaceuticals have already risen from the time of the lockdown. I think pharmaceuticals were never being talked about prior to COVID. Now suddenly pharmaceuticals became the talk of the town, and we saw across the board pharmaceuticals rising. But now with vaccine having been rolled out, I think we are leaving the vaccine excitement of the market, because market discounts everything much in advance. So when the vaccines were announced, when the vaccines were rolled out, we saw market going gaga about them. But now with vaccines already there, I think market has discounted the factor. I think our listeners should be very careful. People who take interest in stock markets, they must make note of the fact that markets always discount a news much before rest of the world does. शरद जी, be careful. शरद जी, यदि हम इसी बातों को लें कि बाजार जो आने वाला यानी रुख हो सकता है उसे डिस्काउंट कर देता है, जो आने वाले तथ्य होते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए खेलता है, ऐसे में पिछले 2 सत्रों में हमने गिरावट देखी और आज फिर अच्छी खासी लिवाली देख रहे हैं। तो इसके पीछे हम किन तर्कों को समझेंगे? यानी अमेरिका में कुछ कहा गया, उसका असर है, या 2 दिनों की मुनाफा वसूली के बाद बाजार में फिर से यानी अच्छा रुख दिख रहा है, आने वाले दिनों में भी उछाल का क्रम जारी रहेगा? किन अर्थों में ले रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ये सवाल सभी लोगों के मन को इस टाइम हिला रहा है कि क्या करना चाहिए जब मार्केट गिरे। और हमने देखा कि मार्च से लेके अब तक अगर आप ट्रेंड देखें तो जब मार्केट में करेक्शन आया, ऐसा नहीं कि मार्केट तब 7,500 पे इंडेक्स निफ्टी आ गया था और आज हम 15,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ चढ़ता है, क्या बीच बीच में करेक्शन आए। पर देखने वाली बात ये थी कि हर करेक्शन में लोगों ने बाइंग करी और उनको उसका रिवॉर्ड मिला, उनको उसका इनाम मिला, क्योंकि मार्केट वापस बढ़ के आई। यही हमने पिछले 2 दिन का देखा। आपने पिछले 2 दिन 300 पॉइंट से ऊपर निफ्टी गिरा और आज फिर एकदम से उसमें उछाल आया। तो अब लोगों को ये लगने लगा है कि जब मार्केट गिरती है तो हमें नए निवेश के मौके उसमें ढूंढने चाहिए। और यहाँ पर एक सतर्क हम करना चाहेंगे मार्केट मंत्रा के सभी लिसनर्स को, जो कि बहुत ध्यान से और बहुत शौक से आपका प्रोग्राम सुनते हैं, कि आप निवेश अवश्य करें, आप जरूर करें, परंतु आप ऐसी कंपनियों में करें जिनकी वैल्यूएशन, जो आप उसकी प्राइस को कंपेयर करें कि जब लॉकडाउन से पहले क्या प्राइस थी, लॉकडाउन के समय क्या प्राइस थी, आज क्या प्राइस है। अगर आपको लगता है कि वो प्राइस उस प्रोपोर्शन में नहीं चढ़ी है जिस प्रोपोर्शन में बाकी के स्टॉक्स या इंडेक्स चढ़ी है, मैं समझता हूं, और कंपनी की बैलेंस शीट देखें, किसी का जरूरत हो किसी सलाहकार से सलाह लें और पूरी तरह से सोच समझ कर निवेश करें। क्योंकि जो छोटा निवेशक होता है ना, वो कई बार अपने आप को फंसा महसूस करता है और फिर ये सोचता है कि यार मैंने पता नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके गलती करी। परंतु अगर सोच समझ के किया जाए तो मुझे लगता है आज भी मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद भी, इतनी वैल्यूएशन हाई होने के बाद भी आज भी मौका दे रहा है। दूसरा, मैं जल्दी से एक और सलाह देना चाहूंगा कि मार्केट को हमेशा लंबे नजरिए से देखना चाहिए। अगर आप मार्केट को रोज के रोज नजरिए से देखेंगे कि 2 दिन गिर गया, आज चढ़ गया, हो सकता है कल फिर करेक्शन आए, परसों फिर चढ़ जाए, बजट आ रहा हो सकता है बजट की अनाउंसमेंट में चढ़े, उससे पहले गिर जाए, तो जो निवेशक थोड़े से लंबे नजरिए से देखते हैं वो हमेशा फायदे में रहते हैं। अगर आप बहुत छोटे नजरिए पे चलेंगे तो आपको कहीं नुकसान ऐसा महसूस हो सकता है कि मुझे नुकसान हो रहा है। शरद जी, हम 2 तथ्यों पर आपका ध्यान ले चलना चाहेंगे। एक, आज रियल्टी सेक्टर में अच्छी खासी तेजी है, 4% का उछाल आया है। और दूसरा, आने वाले दिनों में जो आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, यानी सेक्टर वाइज उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, जो वैश्विक गतिविधियां लगातार बदल रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए? हाँ जी, ये लोगों को बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि रियल एस्टेट सेक्टर, जो कि कोविड से पहले बहुत सबड्यूड था, बहुत निचले स्तर पे था, हम देख रहे थे मकान नहीं बिक रहे, अब ऑल ऑफ ए सडन जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी, लॉकडाउन खुले, लोगों ने मकानों, घरों की खरीद और खासकर हमारी सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग की जो मुहिम चलाई, उससे रियल एस्टेट सेक्टर में जैसे कहते हैं जान फूंक दी गई। और उसकी वजह से सीमेंट, स्टील, जितने भी और टाइल्स, जितना भी घर में सामान लगता है वो सब भी बिकना शुरू हो गया। तो मुझे लग रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में एक टर्न अराउंड जिसको हम कहते हैं, एक मोड़ वो मुड़ चुका है, जो आज तक वो नीचे जा रहा था।
और हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं किसी किसी शहर में टियर 1, टियर 2 सिटीज में आज घरों की डिमांड वापस आ रही है, जो कि हम देखते थे हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से घर बिना बिके खड़े हुए थे। बिल्डर्स भी परेशान थे, लोग भी नहीं खरीद रहे थे कि अभी शायद और नीचे कीमत आएगी। मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुका है और रियल एस्टेट सेक्टर का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा आगे आने वाले समय में नजर आ रहा है। आपने दूसरा आईटी सेक्टर का पूछा। देखिए, आईटी ने तो मुझे लगता है इस कोविड में अगर सबसे ज्यादा लाभ फार्मास्यूटिकल के अलावा मिला है तो आईटी को मिला है, क्योंकि ये जो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर की प्रक्रिया कंपनियों ने शुरू करी, आज हर घर की जरूरत एक लैपटॉप, एक मोबाइल बन चुका है जिसमें सारा का सारा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। तो मुझे लग रहा है आईटी कंपनियों के जो अभी तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें, चाहे इंफोसिस हो, टीसीएस हो और सेकंड अपना मिड कैप कंपनी माइंडट्री वगैरह, अगर आप उनके नतीजे देखें, उन्होंने ऐसे नतीजे पिछले 10 साल में नहीं देखे। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग बीता नहीं है बल्कि अब आ रहा है। और इस कोविड में मुझे लगता है काम करने के जो तरीके को बदला है उसका शेयर मार्केट स्वागत कर रही है और निवेशकों का ध्यान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ बार बार खिंच रहा है। और भले ही उसकी कीमत बढ़ जाती है, फिर भी मुझे लगता है विदेशी निवेशक भी और हमारे भारत के निवेशक भी, रिटेल निवेशक भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आज भी बहुत बुलिश है और मुझे उसका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है। Moving on, the budget session of the Parliament will begin on the 29th of this month. Briefing reporters in New Delhi today, Lok Sabha Speaker Om Birla said the first part of the session will conclude on the 15th of February, which will have 12 sittings. He said the second part of the budget session will begin on 8th of March and will conclude on 8th of April, and it will have 21 sittings. Mr. Birla said the seating arrangements have been made in view of COVID-19 guidelines. He said Rajya Sabha will function from 9 a.m. to 2 p.m. and Lok Sabha will function from 4 p.m. to 9 p.m. ये सत्र 2 चरण में चलेगा। पहले चरण के अंदर 12 बैठकें होगी और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल जिसमें सदन की 21 बैठकें होगी। सदन के अंदर भी कोविड गाइडलाइन के अनुसार हमने बैठने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा का सदन 9 बजे से 2 बजे तक चलेगा, लोकसभा 4 बजे से 9 बजे तक चलेगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल, जो सामान्य रूप से सदन की जितनी भी कार्रवाई हैं, वो संपूर्ण कार्रवाई इस बार सत्र में चलेगी। The budget session will commence with President Ramnath Kovind's address to the joint sittings of both the houses. The union budget will be presented on the 1st of February. Sharad, the budget that's scheduled to be presented on the 1st of Feb, we have got 3 important data points which are different. Bond yield is a multi-year low, Forex is at a multi-year high, and then we have the fiscal deficit. We do not know how things will move in the budget. We'll get to know on the 1st of Feb. How important are these 3 variables to judge the economy, and how will these be reflected in the budget? I think as the finance minister has already announced that this is going to be a never before budget. So obviously, because we have gone through unprecedented times in the last 10 months, I would say. I mean, in a century, the country and the world has not seen something happening like this. I mean, the whole economy, the world economy, the Indian economy has gone through an absolute dramatic, radical change, I would say. I think this calls for some of the parameters which you named. For example, I'll take fiscal deficit. Now, fiscal deficit, for the sake of our listeners, like we can tell, is governed by FRBM, which is Fiscal Responsibility Budget Management Act. And the target there was somewhere around 3.5%. But now, in this situation where we are today, where the government's revenue fell, and the spendings, the welfare schemes were there, the infrastructure spending, various spendings continued, and in fact, government will have to continue to make these spendings. So I think the fiscal deficit going haywire or has crossed the target, the government may decide to ignore the rising fiscal deficit. That's my first point. Second thing you mentioned about the Forex Reserve. Well, Forex Reserves are at an all-time high, and we saw even during the COVID period, the inflow of foreign exchange to the country was absolutely startling. I think the world was perplexed by the thing that whereas the people are pulling out money from everywhere, India was still a very attractive destination. So I think the big Forex Reserve, attractive Forex Reserve, would give government a very, very strong hand in planning out, because you can plan your import bill accordingly. I mean, India
no longer needs to be concerned about its oil bill. India can import things, although we are looking at Atmanirbhar Bharat plan, but still we can't do away imports completely. So I think the Forex Reserve will provide a lot of confidence to the government because it's a contrasting factor where the fiscal deficit is going beyond the target, whereas the Forex Reserve is at an all-time high. And we talk of the bond yield, yes, because of the liquidity which has been flowing in. And I think RBI sets a corrective mechanism in the whole thing because RBI recently did a reverse repo of about 2 lakh crores. So the money is being sucked away because an excessive liquidity can fuel inflation. Excessive liquidity can also make the stocks rise to celestial levels and the valuations may go, out of your calculations. Okay. So therefore, I think RBI is always there to moderate the liquidity and the bond yield. What about the common man? Do you expect any income tax rebates, further rebates for him? Well, I would love to see one, but then from a fiscal point of view, I really don't think the government right now is in a position to relax income tax limits. We have a 2.5 lakh limit below which the tax is not applicable. But then I think government has done enough in the past to make sure that incomes up to 5 lakhs are not taxable through where you've got rebate under Section 89, you've got other standard deductions. So you can easily save tax and not pay tax till a limit of 5 lakhs. So I have my doubts if the government is going to do any kind of changes in the basic tax structure. But obviously because of COVID, some people have lost their jobs, the basic incomes have come down. So you might see some kind of relief coming on, say, medical deduction, like medical spending right now is 25,000 for a normal citizen, 50,000 for a senior citizen under Section 80B. So you might see some relaxation because people spend a lot of money on hospitals, checkups during COVID. So some relief here and there may be given. But I think people should not expect too much happening because let's also imagine a situation. Government runs on your revenue, the taxes you pay. If you are not able to pay your taxes, I don't say you don't pay your taxes, but if you're not able to pay taxes because of a falling income, the government doesn't get its revenue. So if the government doesn't get its revenue, all the development which is to happen in the country, how will that happen? So I think people need to understand that we can't always be looking at tax rebates. But I'm sure you will get some relief here and there in the form of some deductions and rebates. बहुत संक्षेप में यदि मैं समझना चाहूं शरद जी, तो बजट अभूतपूर्व होगा, राजकोषीय घाटे पर बहुत अधिक चिंता नहीं की जाएगी, यानी बहुत बड़ा गैप हो उस पर नहीं ध्यान दिया जाएगा, सुधार भी किए जाएंगे। कुल मिला के 2-3 क्षेत्र जो आपको लगता हो कि इस बजट से अच्छे खासे प्रभावित होंगे, वह कौन हो सकता है? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली क्योंकि मैं यहाँ रुकता नहीं तो मैं वो 3 क्षेत्र ही बताता। पहला क्षेत्र मुझे लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार बहुत बड़ा एक पुश देने वाली है, ये पहला क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र मुझे लग रहा है हेल्थ केयर पर इस बार जरूर सरकार, क्योंकि कोविड ने सरकार को ये बताया कि हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो शायद ऐसे पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए किसी भी दुनिया का स्ट्रक्चर तैयार नहीं था। तो मुझे लग रहा है हेल्थ सेक्टर। और तीसरा सेक्टर मुझे लग रहा है कृषि पर विशेष सरकार ध्यान देगी। कृषि और स्टार्टअप, ये 2 ऐसी चीजें हैं क्योंकि 60-70% आबादी जिस देश की कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधारित है, तो मुझे लगता है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये 3 सेक्टर मुझे लगते हैं। और स्टार्टअप्स के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत पैशनेट हैं, मुझे लगता है स्टार्टअप्स के लिए और भी कुछ निकल के आने वाला। जी, आइए आगे बढ़ें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज गुजरात के हजीरा में शेल इंडिया के एलएनजी ट्रक लोडिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि ये इकाई उन स्थानों पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को बढ़ावा देगी जहां कोई गैस पाइपलाइन नहीं है। ये लंबी दूरी के परिवहन में एलएनजी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देगा। आज की इस महत्वपूर्ण पहल पर शेल इंडिया की टीम की प्रशंसा करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि एलएनजी क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से नए बाजारों के विकास में मदद मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, उद्योगों के लिए स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित होगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुविधा होगी। उन्होंने कहा ये भारत के स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर बड़ा कदम है। आइए चलते हैं वैश्विक शेयर बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर आज तेजी दिखी है। अमरीकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के संकेतों पर निवेशकों ने अच्छी खासी लिवाली की। विशेषज्ञों के अनुसार यूरोप और अमेरिका के शेयर बाजारों की तुलना में एशियाई बाजार इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हांगकांग का हिंग सेंग सूचकांक 2.7% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.6% ऊपर आ गया। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.4% की वृद्धि हुई। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स
0.2% लाभ के साथ बंद हुआ। हालांकि बिकवाली का दबाव चीन में देखा गया और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% लुढ़क गया। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी लिवाली दिख रही थी। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.3% ऊपर चल रहा था। फ्रांस का कैक 40 और जर्मनी का डेक्स भी 0.3% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। यहीं पर यदि हम अमरीकी बाजार की ओर चलें तो वहां पर कल छुट्टी रही थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, उनकी स्मृति में बाजार बंद रहे। वैश्विक बाजारों की और हम आपका संक्षिप्त प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, खासतौर से जो एशियाई बाजारों के लिए प्रेडिक्शन हुआ है कि वहां पर अमेरिका और यूरोप की तुलना में वहां अपेक्षाकृत अधिक बढ़त दिखेगी। क्या कारक हो सकते हैं? देखिए, उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यूरोप और अमेरिका में हमने देखा कि कोविड का जो प्रकोप है आज भी बहुत है। यूरोप में बहुत जगह आज भी लॉकडाउन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। रोज हम एक नया देश सुनते हैं जहां पर लॉकडाउन लग रहा है। और अमेरिका में भी कोविड का हम जान रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन नहीं है ज्यादातर अमेरिका में, परंतु कोविड का आज भी प्रकोप पूरा है। जबकि हमने देखा कि जो एशियाई देश हैं, भारत उनमें मैं इस समय सबसे आगे कहूंगा, क्योंकि हमारे केसेस बगैर वैक्सीन के ही बहुत कम हो गए हैं। चीन ने भी ये घोषणा की है कि हमारे यहाँ कोविड नहीं है, हालांकि वहां लॉकडाउन कुछ सुनने में आ रहे हैं, पर इतना प्रकोप नहीं है। चीन की ग्रोथ रेट भी अच्छी आई। तो एशिया के पहली बात तो एशिया में कोविड का प्रकोप कम है, पहला कारण ये। दूसरा, जो अमेरिका में जो रिलीफ पैकेज, जो स्टिमुलस पैकेज $1.9 ट्रिलियन का, जिसकी अभी घोषणा की गई है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से पैसा निकल के इमर्जिंग मार्केट जिसको हम कहते हैं, जो विकासशील देश हैं, उनमें निकल के आता है। तो इसलिए यहाँ पर लिवाली दिखी कि यहाँ पर लोगों को लगा कि पैसा आगे आएगा, तो इससे निवेशकों की रुचि बढ़ती है कि अगर वो ले रहे हैं तो हम पहले क्यों ना ले लें। ये हर एक के दिमाग में आता है। तो मुझे लग रहा है कि इन सब बातों को देखते हुए आज एशियाई बाजारों में आपको लिवाली का माहौल दिखाई दिया। जी। Moving on, the oil prices today climbed amid optimism that government stimulus will boost global economic growth. On the other hand, concerns regarding renewed COVID-19 pandemic lockdowns globally capped the gains. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $55.50 per barrel, while WTI crude prices were around $52.70 per barrel. चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 85 रुपए बढ़ा 49,979 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी 526 रुपए उछलकर 65,955 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा बढ़ा $1,843.30 प्रति औंस पर पहुंच गया। बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे, सोना चांदी के खासतौर से सोने की कीमतों में अच्छी खासी तेजी हमने देखी थी। अब जैसे जैसे कोविड कह लें असर उसका कम होता जा रहा है, वैसे में क्या फिर से इसके बढ़ने के आसार हैं या अब इसके मूल्य नीचे आएंगे? देखिए, सोने का मित्र कौन है? सोने का मित्र है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जिसको कहते हैं। तो जैसे जैसे ये अनसर्टेनिटी कम होती जा रही है, तो हमने देखा सोना एक दफे जो 55-56 हजार 57 हजार तक पहुंचने लगा था, वो जैसे जैसे उसमें से अनिश्चितता हटी, सोने का दाम नीचे आया। परंतु मेरा ये मानना है कि जो सोने में निवेश करना चाहता है, अगर वो उसको लंबे वक्त के लिए रखे तो उसका बड़ा अच्छा उसको रिटर्न मिल सकता है। भले ही सोना इस समय 48 और 49 हजार के बीच में चल रहा है, पर मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में, और जैसे ही अमेरिका में ये स्टिमुलस घोषणा होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, मुझे लग रहा है लोग सोने में और निवेश बढ़ाएंगे और आगे इसकी कीमत आपको बढ़ती हुई दिखेगी। जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। My pleasure. Thank you. Thank you, Sharad, for being with us. And before we close the headlines once again, benchmark domestic stocks surged more than 1.5%, recovers losses of the last two sessions. Sensex closes at 49,398, Nifty settles at 14,521. And Asian stocks log gain amid expectation of more U.S. government spending to boost the economy. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra.